Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा शिखरवार जी। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ में है लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Well, key domestic indices log modest gains. Sensex closes above 60,300 points. Nifty settles above 17,800 level. The rupee appreciates to 81 rupees and 77 paise against the US dollar. And Brent crude declines to trade near $80 per barrel mark. घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त। सेंसेक्स 60,300 अंक से ऊपर जबकि निफ्टी 17,800 के स्तर के आसपास बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $80 प्रति बैरल के आसपास। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और नजर डालते हैं आज के लिए शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 60,300 अंक से ऊपर जाकर बंद हुआ जबकि निफ्टी 17,800 अंक के स्तर से ऊपर पहुंच गया। हालांकि नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज ही बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 170 अंक यानी 0.28% की बढ़त के साथ 60,301 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44 अंक यानी 0.25% ऊपर आकर 17,813 पर पहुंच गया। वहीं बीएसई के विस्तृत बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की तेजी दर्ज हुई। The key domestic indices today logged modest gains. The BSE Sensex closed above 60,300 points, while the NSE Nifty settled above 17,800 level. Both stocks were up even as cues from global share markets were negative. The Sensex added 170 points or 0.28% to finish at 60,301. Nifty at the National Stock Exchange also rose 44 points or 0.25% to end at 17,813. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.27% and the small-cap index added 0.34%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 firms rose, while 9 fell. Power Grid surged 2.5% and Nestle India climbed 1.6%. Indus Inbank rose 1.5% and Larsen & Toubro gained 1.2%. On the other hand, Bajaj Finserv plunged 0.8% and NTPC slumped 0.7%. Reliance and Kotak Bank both fell around 0.5% each. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. The Realty Index gained 1.3% and capital goods surged 1%. On the other side, metal sector declined 0.5% and oil and gas slipped 0.2%. The overall market breadth was positive as shares of 1,845 companies advanced while those of 1,651 companies declined. A total of 135 shares remained unchanged. So, Deepshika, how do you view this in totality at 60,000 plus when the Sensex had touched once way beyond 63 as well? Can you say it's now stable? Stability is around? Lalimaji, what we're seeing here is we're not seeing exuberance. We are seeing very tempered reaction to what is going on around the world and also in the domestic economy.
if you look at, the fourth quarter results, the results have been very mixed, it's been a mixed bag for different sectors. So, it's pointing that, India growth story remains intact. Indian markets may not be that impacted. But there are mixed signals coming from advanced economies, particularly the US economy, European markets, European countries, where, there still are fears of a recession. While, it may be averted, but there still is slight nervousness as to what is going to happen there. And that is actually reflecting in the way markets are behaving. So you are seeing very tempered, measured sort of reaction in the markets where they're not going overboard, but there seems to be some confidence which is being displayed. It's always said that it's the nature of the markets to be volatile. So when you see stability, you kind of gain a little confidence and you say, well, maybe things are better. Yes, absolutely. Because you are seeing a very tempered, measured reaction, which is very unusual for markets to behave. But I think it's everybody is watching, how things really pan out. There is a FOMC meeting next month, so probably, you'll see a sharper reaction then, because that would actually make it very clear as to which way things are headed. दीक्षिका, हम अगर थोड़ा सा मार्केट पे नजर डाल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि मिक्स्ड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी हो रहा है कि जो पहले स्टेबिलिटी कुछ समय पहले तक नहीं आ रही थी, उसको एक स्थायित्व तो मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है, जो निवेशक है उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, निवेश करने के लिए उत्साह बढ़ रहा है. बिल्कुल. अगर आप देखिए, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि जिनके रिजल्ट्स जो हैं, कुछ कंपनीज के बहुत अच्छे आए. आज मारुति का रिजल्ट है, और वैसे भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है. हमने देखा है कि ग्रोथ जो है दर्ज हुई है. इस महीने भी जो नंबर्स आए थे बहुत अच्छे आए. तो जो सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ा कंजम्पशन है, डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड है, वहां पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा है. जो असर आ रहा है यूएस इकोनॉमी का ज्यादातर आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज में दिखाई दिया है, और वो उनके स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. Right. तो ये उतार चढ़ाव जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उससे ऐसा नहीं कहेंगे कि अलग है, उसके लाइन में ही चल रहा है, उसके बराबर चल रहा है. आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका का जो बैंकिंग संकट है, अगर उसे एक साइड में रख कर देखें, दूसरी साइड में इंडियन मार्केट को रख करके देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं हो रहा है इस चीज से? हमारे बाजार को ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है. जो नर्वसनेस हमने देखा था कि जब सिलिकॉन वैली बैंक का जो हादसा हुआ था, और जो स्थिति अब वहां बन रही है, ऐसा सारे पॉलिसी मेकर्स हमारे यहाँ सबने कहा है कि ऐसा कोई असर हमारे बैंकिंग या फाइनेंशियल क्षेत्र पे ऐसा कोई स्पिल ओवर इम्पैक्ट नहीं होगा. और उसके अलावा ग्लोबली भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कंटेजियन जैसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा. ये एक मतलब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे जो यूएस में हुए या यूरोप में हुए, और वहां के जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने उस पे मेजर्स लिए, सरकार ने मेजर्स लिए और स्थिति को काफी नियंत्रित कर लिया है. तो ऐसा स्पिलओवर इम्पैक्ट जो है ना तो विश्व में और ना ही हिंदुस्तान के वित्तीय क्षेत्र में ऐसा होने के आसार दिखते हैं. तो और वही चीज आपको मार्केट में दिख रही है कि जो नर्वसनेस थी वो थोड़ी सी गई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है. अगर थोड़ा सा एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं कि रेलवे ने जब से अपना मतलब शेयर मार्केट में कदम रखा, उसके बाद से रेलवे के स्टॉक्स में इतनी ज्यादा तेजी कभी नहीं देखी कि जितनी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं. इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? किस तरह के कारण रहे, फैक्ट्स रहे हैं जिसने इतना बूम दिया है रेलवे को, जो कि मतलब ये भी दिखाता है कि हमारी कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि भी बहुत तेजी से हो रही है? देखिए, रेलवे का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, फ्रेट का भी, पैसेंजर्स का भी, तो रेलवे अर्निंग जो है वो उसमें काफी सुधार हुआ है जी. और वही चीज दिख रही है रेलवे के स्टॉक्स में. उसके अलावा आप देखेंगे सरकार ने एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान बजट में अनाउंस किया है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेलवेज के पास आएगा.
तो रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो है इस साल और भी बढ़ेगा, उसके आगे साल और बढ़ेगा, तो उसका असर जो है रेलवे नेटवर्क, रेलवे के अर्निंग्स पर भी आएगा। तो वही चीज हम देख रहे हैं, जो रेलवे के एंटिटीज हैं, रेलवे के PSUs जो स्टॉक मार्केट में हैं, उनके परफॉर्मेंस में हमको दिखाई दे रहा है। Deepshikha, we are now the world's most populous country. We have overtaken China, but to take it to see it in a bit of a positive light, we are also a largely consumer-based economy. So people say that will add to our advantage, and India will never see a recession of the kind the West fears, because we save money, and we have a huge tradition of festivals where there's a lot of, and people travel, there's a lot of domestic travel happening. We also have the big fat Indian weddings. Are all these factors, can they hold us in better position in our country? We have kind of strong fundamentals because of all this. Can we say that? See, we are in a very different situation from the world at this juncture. If you look at the past 2-3 years of COVID pandemic, government was very measured in its response. They did not really go whole hog, and that has given us the advantage or the edge over other economies, which really are in a very difficult situation at this juncture with their inflation and other things. Apart from that, if you see the corporates also, they also cleaned up their balance sheets for the past 3-4 years. So they are ready to invest. Consumers also, if you look at the performance of the agriculture sector, we've seen agriculture sector has grown. The other sector, if you look at some segments of the manufacturing sector, they are also doing pretty well. And agriculture sector also fuels a huge demand, and which can be seen impacting a lot of these consumer sectors. So those sectors are doing well. Apart from that, government's huge capex expenditure plan, that will help us sail through, because there's a large support which is coming from the government. I will not say that we will not, face any impact from what is happening in the developed world. We do, because we have a robust export sector, but the contribution of exports is not very big. So definitely India itself is a huge market, and that has an advantage. But we will not be shielded totally from what's happening in the global world. There would be some impact, but it would be contained. बाजार की तेजी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि FMCG का क्षेत्र हो, ऑटो सेक्टर हो, बैंकिंग, खासतौर पर PSU बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, और रियल्टी स्टॉक्स जो हैं आजकल लोगों को खूब भा रहे हैं, खासतौर पे जब से ये 3-4 साल का जो टाइम है, इनमें काफी बूम आया है इन क्षेत्र में। आपको स्टेबिलिटी दिखाई देती है इस क्षेत्र में, या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम देखें तो आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, जो शेयर बाजार का परफॉर्मेंस है, 2-3 जो फैक्टर्स हैं उसको ड्राइव करेगा। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो एक जो है, सरकार की तरफ से इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से हो रहा है। रेलवेज है, रोड्स हैं, तो इन क्षेत्रों को जो भी सेक्टर सपोर्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जाहिर सी बात है कि वो बेटर होगा, क्योंकि डिमांड इन प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी। उसके अलावा चूंकि ये सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उससे कंजम्पशन डिमांड भी आपकी बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि उसके अलावा आप मॉनसून जो है, जो IMD का फोरकास्ट है, नियर नॉर्मल बोल रहे हैं वो, तो कृषि क्षेत्र के उत्पादन की भी, कृषि क्षेत्र का भी जो सपोर्ट कंज्यूमर सेक्टर्स के लिए रहेगा, तो उसका असर दिखाई देगा। तो हम वो जो मूवमेंट है हम देख रहे हैं FMCG में, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में, अगर सिर्फ स्टॉक्स को ना रखें, रियल परफॉर्मेंस भी देखें, तो हम देख रहे हैं कि मारुति का रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा किया है कंपनी ने, और व्हीकल सेल्स में वो चीज दिख रही है। तो परफॉर्मेंस जो है वो मतलब, और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस दोनों लिंक चल रहे हैं।
अभी बहुत सारी योजनाओं की हमने बात की है। आज एक बहुत ही बड़ा हेल्थ सेक्टर में भी प्रोग्राम हुआ, एडवांटेज हेल्थ करके। इससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसको भी बाजार में बूम मिलेगा, इनको भी फायदा होगा। और योजना भी सरकार की ऐसी है कि वो लगातार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है कि हेल्थ सेक्टर में भी काफी सारे जॉब्स हों, चीजों को और बढ़ावा मिले, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ज्यादा हो और हम लीड कर सकें वर्ल्ड लेवल पर। बिल्कुल। कोविड के दौरान सरकार की तरफ से हमने देखा था उस वक्त थोड़ी मुश्किल की स्थिति थी। देश के पास पीपीआई किट्स नहीं थे, N95 मास्क की कमी हो गई थी और हमने बहुत कम समय में हम उस स्थिति में आ गए कि हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, हम निर्यात कर पा रहे थे उन प्रोडक्ट्स का। तो जब सरकार ने ये देखा और सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि हमारी जो निर्भरता है किसी एक देश पर नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, और खास तौर पे दवाइयों को लेकर, तो स्कीम्स लाई गई हैं जो ड्रग पार्क्स है या PLI स्कीम्स हैं, उस तरह का सपोर्ट जो है वो लाया जा रहा है ताकि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने, हमारा प्रोडक्शन बने, और आत्मनिर्भर ही नहीं, हम उस स्थिति में पहुंचे कि जब हम दूसरे देशों को भी सपोर्ट कर पाए। हम आपने देखा है कि वैक्सीन के जरिए, वैक्सीन मैत्री के जरिए हमने काफी सपोर्ट किया है और देशों को भी। तो उस तरह से देश में तो जॉब्स आप क्रिएट करें, लेकिन उस स्थिति में भी आए कि आप दूसरे देशों को भी सपोर्ट कर पाए। And we've also had a lot of reforms in the MSME sector, and the fact that it contributes about 48% to our GDP, that has also helped in stabilizing the economy. So MSME sector, this was a sector which was hit the most during pandemic. Small units. But if you see, there were a lot of policy interventions during the pandemic time through the Atmanirbhar packages that were announced by the government to support the sector. There was the ECGLS scheme. There was support being driven through Mudra. How there was also a change in the definition to facilitate, growth of MSME. How a small micro unit can grow to a medium unit. So all around the focus was how can, MSME, investments in MSME can be increased, how can they be supported through credit interventions. And also, there was also this initiative of fast, expeditious clearance of dues. Right. A lot of public sector entities, government dues, they were instructed to clear dues of MSMEs very quickly. So a number of initiatives were taken to ensure that, they sort of are not hit hard by the pandemic and they are able to sort of sail through. और अब एशियाई बाजार पर हम नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज अधिकतर गिरावट का रुख देखने को मिला। केवल हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% ऊपर आ गया। जापान का निक्केई 0.7% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% लुढ़क गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक करीब करीब बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में आज यूरोपीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। लंदन का FTSE 100 0.4% नीचे गिर गया। जर्मनी का डेक्स 0.7% लुढ़क गया और फ्रांस का कैक 1.1% नीचे आकर कारोबार कर रहा था। तो एशियाई बाजारों और यूरोपीय बाजारों का जो हम रुख देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव रुख हमें देखने मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये नेगेटिव रुख हमें देखने को मिल रहा है। दो अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं। देखिए, अगर यूरोपियन मार्केट्स को आप देखें या एशियन मार्केट्स को भी देखें, वो जो नर्वसनेस जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूरोप में तो खास तौर पे, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी। उसके अलावा जो एशियाई बाजार हैं, वहां पर नर्वसनेस जो आ रही है वो आ रही है कि एडवांस इकोनॉमीज में क्या होगा। वो ज्यादा कनेक्टेड हैं। कुछ एशियन इकोनॉमीज जो हैं वो ज्यादा हद तक निर्यात पर निर्भर हैं, तो उन पर जाहिर सी बात है कि अगर एडवांस इकोनॉमीज में रिसेशन आता है तो उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो वो देख रहे हैं कि उनके पास उनका परफॉर्मेंस जो है इससे लिंक्ड है, तो उसका असर आप देखेंगे एशियाई बाजार पर भी आ गया। यूरोप पे तो डायरेक्ट असर है। जी।
All right, let's take a look at the U.S. markets now. The three major U.S. stock indices logged losses of 1 to 2%. The U.S. stocks suffered their deepest decline so far this month amid investors' concerns about a slowing U.S. economy. Plunging deposits at regional First Republic Bank also added fear among investors about the banking sector health. The Dow Jones Industrial Average fell 1%, the S&P 500 declined 1.6%, and the Nasdaq Composite plunged 2%. A bit of a dichotomy, Deepshika, in the US, where they say that technically it is in recession, but the employment rate is probably going high, is going up. How does one explain this dichotomy there? Which is what has flummoxed their policy makers also, and which is why we've seen such sharper and high interest rate increases in the US. Labor data, employment data there has remained very robust, and which is why the Fed went ahead so much, which is blamed on the kind of support which was extended during pandemic possibly, which had kept. But now the indications are that the measures taken by the Fed may sort of begin to sort of have some impact at the ground. And also the new developments in form of the financial sector, the banking incidents that have happened in whether it was Silicon Valley Bank or there are some newer developments which are happening, which have which could sort of play out in a different way. But we are now, of course, heading to a situation where, again, we are seeing a lot of job cuts and so on in the companies, in the tech sector particularly, which is bearing the brunt of, what's happening there. Yes. दीपशिका, अगर अमेरिका की बात करें तो हम अभी ये देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है. यूएस जो मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंट्रीज में कराता है, अब उसको ये लग रहा है कि उन देशों के बजाय हम इंडिया में अगर अपना काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होता है. तो भारत में निवेश का एक दौर होना और दूसरी ये चीजें होना कितना हमें मतलब पॉजिटिव ये इफेक्ट डालेंगी हमारी इकोनॉमी पर? बिल्कुल. यूएस में, और आप जब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन जब आई थी भारत, उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ वो फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहे हैं, जो यूएस के मित्र देश हैं वहां से अपना सप्लाई लाना चाहते हैं. तो यूएस में ये पैंडेमिक के दौरान ये काफी इस चीज पर मूवमेंट हुआ कि लोग, देश जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी सप्लाई चेन्स जो हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, एक देश पर निर्भर नहीं करें. यूएस की भी काफी निर्भरता हो गई थी एक देश पर, और अब वो चाह रहे हैं कि बाकी देशों में उस पे डाइवर्सिफाई किया जाए. भारत को उन्होंने कहा है कि एक मित्र देश है, तो भारत में वो चाह रहे हैं कि यूएस कंपनीज जो हैं वो आएं और निवेश करें. यहाँ पर बहुत पुश दिया जा रहा है, इसको स्ट्रेटेजिक तौर पे भी देखा जा रहा है. तो भारत की तरफ से भी किस तरह से ये जो सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो रही हैं उनको किस तरह से यहाँ पे खींच के लाया जा सकता है, सरकार की तरफ से भी बहुत मेजर्स लिए जा रहे हैं. फैसिलिटेशन किया जाए किस तरह से निवेशकों का, उस पर बहुत फोकस किया गया है. पीएलआई स्कीम के अलावा जो है खास तौर पे कि किस तरह से ज्यादा आसान बनाया जाए निवेश को, उस पे काफी काम किया जा रहा है. And the fact that government is trying its very best to have those ease of doing business reforms it is bringing in, that also may have opened up our country to investment from the US. Definitely. And the fact that we are now 100% electrified, and we are now streamlining our labor and other laws also. Definitely, there is a huge effort which is going towards making it easier for businesses, especially foreign investors. So if you see, there is a single window clearance, which is taking clearances to the last mile, where center is trying to get state governments and even getting municipal bodies on board to ensure that when an investor comes, he gets a visibility of where he can put up his plant, which district, which municipality, and whether it can get clearances from there and how soon can it get. So these kind of measures which investors are looking for, apart from the overall climate,
another thing, which adds to the India story is that India is a huge market. Apart from, attracting or becoming part of the global value chain, supply chains, India itself is a huge market. So a foreign investor can not just look at it as an investment hub for domestic but also as exports, so both the factors would be available to the investors. So a lot of effort going into, making it attractive for global supply chain. And add to that the fact that we are now investing hugely in ports, because ports are important for exports. And hugely, we are investing hugely in infrastructure, expressways and all. That will further facilitate the transportation and reduce costs. We are also talking about using waterways as means of transportation, which will be probably 50 paise per kilometer and things like that. So that also will facilitate the ease of doing business. Yes. जी हाँ, अब रुपए पर नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.41% नीचे आकर 101.45 पर कारोबार कर रहा था। All right, and let's take a look at the Maruti Suzuki story. Maruti Suzuki's standalone net profit jumped 43% year-on-year to 2,624 crore rupees for the fourth quarter ended March 2023. It was 1,839 crore rupees in the same period last year. The Delhi-based auto major's revenue from operations surged 20% year-on-year to 32,048 crore rupees for the fourth quarter. The same stood at 26,740 crore rupees a year ago. And now, what would you say about all right, let's take a look at oil right away. Oil prices today posted modest losses amid weak U.S. data that raised fears of recession in the world's biggest economy. In intraday trade, Brent crude was trading at around $80 per barrel. West Texas Intermediate crude was also down at $76.60 per barrel when reports last came in. So, Deepshika, good company results we've had, and stocks also. How do you view that? How do you see that affecting the economy? So, if you look at the results which are coming out for fourth quarter, we've had a very mixed bag. Some sectors have done tremendously well. Some sectors have seen the pressure which is coming from the advanced economies, particularly tech sector, the IT companies' results. If you've seen, they've not sort of met market expectations, and they've remained below target. So definitely shows the challenges that are before the Indian economy in that sense. In some segments, the demand remains very strong, which is being displayed by, like Maruti Suzuki. The automobile sector has done very well. Some segments of financial services sector have also done well. But going forward, how is it going to pan out for these sectors? Whether the domestic economy will be robust enough to support this, we'll have to see. But overall, the cues look positive, though there is a build-up of nervousness because of what is happening globally. Now we know there is a banking challenge there in the US, which seems to be making the markets nervous. Right. गोल्ड पर नजर डालते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार वाला सोना 170 रुपए की गिरावट के साथ 60,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दूसरी ओर मई अनुबंध वाली चांदी 30 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 74,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,006 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी उछाल के साथ $25 30 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। A brief comment on the gold prospects. Gold is largely sort of, it moves on what happens to the dollar, what happens to, what the US Fed is doing, and also what happens to the US economy. So a lot would depend on what, how the FOMC behaves, how US economy does. Right. All right. Before we close, here's a reminder of the headlines. Key domestic indices log modest gains.
Sensex closes above 60,300 points. Nifty settles above 17,800 level. Rupee appreciates to 81 rupees and 77 paise against the US dollar, and Brent crude declines to trade near $80 per barrel mark. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.